A young man is dead, a young woman's life is destroyed, and there are two families who are absolutely in a mess right now. Today, we are talking about a recent incident that happened in Pune with the names Ketan and Sia. What exactly, is going on in today's Gen Z, the next gen. Particularly, I am bringing this out as a family business mentor. I work with the top family businesses, the next generation in the family businesses, and this is something that I thought I should talk about. I am not saying what Sia did or what the crime happened. I am not defending anyone. I am not accusing anyone. I am not pointing fingers anywhere. The purpose of this video is to get inside the mind of the next generation in the family business, get inside the mind of these business families, and get inside the mind of the next generation who is, who are living in these टाइम्स विद द फैमिली बिजनेसेस. तो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि वो पेरेंट्स ये वीडियो देखें, ये वो बच्चे ये वीडियो देखें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ मुझे लगी है वो ये लगी है जब सिया ने बोला कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए शादी के लिए मना नहीं कर रही थी. शी वुड रादर किल समवन देन हैव पुट अ डेंट ऑन हर फैमिलीज रेपुटेशन. सो द फैक्ट दैट शी टोल्ड द पुलिस दैट इट वाज ईजियर टू किल केतन than put a dent in the reputation of her family, it should awaken the parents. It should awaken every child who is in marriageable age. Because, there's a very thin line ki there's a fear of destroying your family's reputation, and that fear has surpassed the fear of destroying your own life. So imagine what is going on in the mind of a 19, 20-year-old right now. How the kind of control that the parents are having on this kid. So let me first be very clear. The case is still under investigation. There are allegations, there are police claims, there are media reports, there's all kinds of family settled statements going on. There's also many unanswered questions. And my purpose of making this video is not to point fingers or not to give any kind of judgments here. I am here inviting the parents to get present to the level of control you are putting your offspring to, कि यार उसको इतनी भी communication नहीं है अपने parents के साथ ये बोलने की कि hey dad, hey mom, I'm not ready to get married. Please don't get me married so soon. Or, something like, I would like to take some more time before I get married. How hard would it be for this girl? What would be going on in her head that she could not do that? Why did a young woman allegedly feel unable to say, hey, dad, I don't want to marry him? How did an arranged marriage setup lead to a point of murder? And two well-off families we are talking about here, well-educated families we are talking about here. And this is the point where this whole situation becomes much larger than a typical one family or two families. It is about the world of Indian parenting. It is the family business culture. It is the marriage pressure. It is the control, the diplomacy, the dependency, and the obsession with log kya kahenge. पता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना a typical marriage is not a marriage, it is a project, it is a shosha, it is a status, it is a business communion, so to say. It becomes a status announcement, it becomes a business alliance, it becomes a Instagram reel, it becomes a signal to the community कि यार ये फैमिली ना ठीक कर रही है, they are doing good, देखो कितना अच्छा रिश्ता है. Things like that. Because family reputation is not just emotional. Na? Family reputation is much more commercial than emotional. So when a son or a daughter says कि मेरे को ये marriage नहीं चाहिए है, आज भी टैबू है कि भैया देखो उसकी तो 2 दिन में शादी टूट गई या 2 महीने में शादी टूट गई या 2 साल में शादी टूट गई. It is a taboo. So rather than cheering that up, hey dude, you realized कि मेरे को 2 साल में नहीं रहना है इसके साथ यार. या यू रियलाइज 2 दिन में ही मेरे को नहीं रहना है इसके साथ. हाउ अबाउट रिस्पेक्टिंग दैट? हाउ अबाउट रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड्स विल? हाउ अबाउट रिस्पेक्टिंग योर सन्स और डॉटर्स डिसीजंस? So, this is also a shout out to all the parents. My wife and I were having a conversation earlier about how we want our kids to grow. And I was like, I want to make them so independent
दैट आई ट्रस्ट दैट वो ना सही डिसीजन लेगा. सो एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होता है. आई वॉन्ट टू ट्रेन माई सन, आई वॉन्ट टू टीच माई सन्स. सो a little bit of context, your life is as good as your decision making power or as good as your decisions. Your business is as good as your decisions are. So what exactly is business? Family business है क्या? हम रोज ऑफिस जाते हैं. ऑफिस जाके हमने क्या करना है रोज? हमारा काम as promoters, as owners of the family business is making decisions, is taking decisions. So your business is as good as the decisions you take. Your business will grow as fast as the decisions you take. And I'm not necessarily saying it has to be the right decision. Take a decision. अगर wrong decision है, then you're one step closer to the next right decision. At least take decisions. Your speed of your decision making will determine how fast and how far you grow in life. So this is where I was coming to कि यार trust your kids with their decision making. बट ट्रस्ट करने के लिए अपने बच्चे को डिसीजन मेकिंग के लिए आपको उनको कंट्रोल से छोड़ना पड़ेगा. अगर आप सारा टाइम कंट्रोल करते रहो कि यार मैं डिसाइड करूंगा कि ये कौन से स्कूल जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा इसके दोस्त कौन होंगे, मैं डिसाइड करूंगा मूवी कौन सी देखेंगे, मैं डिसाइड करूंगा ये कपड़े कौन से पहनेंगे, मैं डिसाइड करूंगा पढ़ाई कहाँ, कौन सा सब्जेक्ट, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मैं डिसाइड करूंगा नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कॉलेज में कहाँ जाएंगे, मैं डिसाइड करूंगा कि, तो भैया यू आर मिसिंग आउट on the freshness that a child brings into this world, because everything is controlled. If you decide everything for your child, I mean, obviously, yaar, till a certain age, you should decide, and that is your job, that is our job as parents ourselves. But we should nurture and teach our kids, we should upbring our kids in a way that they become good decision makers. And I would like to see that world where the parents are trusting their kids to take the right decisions, take the good decisions for themselves. तो अभी इशू क्या था यहाँ पे? इशू यहाँ पे what I am assuming ये था कि यार maybe Sia's parents don't trust Sia to take the right decision for her, for herself. और वो भी उन्हीं की गलती है. क्यों नहीं ले सकती भाई वो डिसीजन अपने लिए सही? तो अगर आपको ये देखना है कि if your offspring, if your son or daughter is taking bad decisions, that is also on you. That is your upbringing ना. आपने upbringing अगर सही की होती तो वो सही डिसीजन लेंगे. अगर आपकी अपब्रिंगिंग ही खराब है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, इसलिए आप ही उनके लिए सारे डिसीजन ले रहे हो जो आपके हिसाब से ठीक है और उसके हिसाब से गलत है. तो पहले तो डियर इंडियन पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को अपब्रिंग ऐसे करो कि वो सही डिसीजन ले पाएं, अपने लिए अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएं. अच्छा, हमने ये भी बहुत सुना है कि हम बिजनेस में डिसीजन लेते हैं, या बिजनेस में हम सबने ये सुना है, जितने भी नेक्स्ट जेन इन द फैमिली बिजनेस ये वीडियो देख रहे हैं, कि यार ये ना मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, ये डिसीजन मैं तेरे लिए ले रहा हूँ, या दिस विल बी गुड फॉर यू. भाई नेक्स्ट टाइम सम पेरेंट डज दैट फॉर यू, प्लीज आस्क देम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ इज दिस बेनिफिटिंग मी, हाउ इज दिस गुड फॉर मी, हाउ इज दिस गोइंग टू बी गुड फॉर मी. अगर दो फैमिलीज में शादी होने के बाद कुछ खटपट हो रही है या कोई भी इशू आ रहा है दोनों बच्चों में, क्या पेरेंट्स लिख के दे सकते हैं कि आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस मैरिज, दिस अरेंज मैरिज डिड नॉट वर्क? आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इफ द अरेंज मैरिज डजंट वर्क, देन तो पेरेंट्स आराम से बोल देंगे हाँ जी ये तो इन्हीं का है, देख लो. तब लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स कि यार हमसे गलत डिसीजन ले लिया जी, हमने गलत फैमिली चूज कर लिया, हमने गलत. क्योंकि लव मैरिज के केस में तो यही होता है. लव मैरिज के केस में स्पेशली इन बिजनेस फैमिलीज देयर हैज बीन अ ट्रेंड वेयर दे, नो मैटर हाउ गुड द पार्टनर कम्स, you know, this works both sides. If even if one family is not aligned with the partner who's coming, with the bride or the groom, they make sure to belittle that person. But I am not going to talk a lot more about that. I'm going to stick to the topic of the family business and how this is relating to the family business context here for the next generation. हमने ये देखना है, Indian families love the word honor, but reputation is different from honoring someone. Honoring someone is letting them take their decisions. Honoring someone is respecting them for who they are, and it goes far beyond reputation in the long run. We have to understand, if I am honoring of someone, I will go out of my way to make that person feel comfortable. एंड यहाँ पे तो अपने घर में, अपने बिजनेस में बच्चों को कंफर्टेबल नहीं फील कराया जाता, उनको बिलिटल किया जाता है. क्यों? बिकॉज हमें तो उनके फादर को ऐसे ट्रीट किया गया था उनके ग्रैंडफादर से, तो उनको तो तरीका ही आता है. तो उनका ट्रॉमा क्या है? फादर का ट्रॉमा मिला ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर को ट्रॉमा मिला ग्रेट ग्रैंडफादर से, और ग्रेट ग्रैंडफादर तो भाई इंडिपेंडेंस के टाइम से स्कैरसिटी में जी रहे थे, और वो ट्रिकल डाउन होते होते आज की डेट में 19 साल के बच्चों की, पढ़े लिखे बच्चों की शादियां करा रहे हैं
forcefully. So if your daughter does not want to marry someone, it is honoring of you for your daughter to be there for her, yaar, to give her that space, give her that stand, give her that clearing ki beta, I am with you no matter what. I am standing by your side. Now, please understand, I am not defending what she did. Please don't get me wrong. What she did definitely is not right. I am only trying to understand the psychology of what is going behind this whole fiasco that has gone down and the level of planning that went down. You know, taking him twice to the fort and then making a reason of birthday and then passport getting lost and making different trips and whatnot. Imagine how intelligent this girl would have been had the parents put her in the right track, what she could have been capable of. But अगर दिमाग गलत जगह जा रहे तो भाई गिरेगा वो तो यार, नुकसान तो होगा ही. An idle mind is a devil's workshop. I don't know how that applies here, but yeah, I just felt like saying that. आप अगर ये देखो ना कि young people आज की डेट में Gen Z, Gen Alpha क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों सच नहीं बोल पा रही. अगर उसके पेरेंट्स को उसको वो स्पेस मिली होती कि हाँ यार लड़का नहीं पसंद आया या छोड़ पसंद नहीं आया, लड़का बहुत अच्छा है मगर मेरे को नहीं करनी शादी उससे, या मेरे को दूसरा कोई पसंद है, भाई have that space na, create that space in a house. What is the point in living in a house if I can't speak the truth, if I can't speak my truth? अगर आप पेरेंट्स को सच बोल दो, वो बोलते हैं कि भाई ये इस टाइप के पेरेंट्स हैं जिनको आप सच बोल दो तो बोलते हैं यार यू आर बीइंग रूड. अगर आप उनको फैक्ट्स दिखा दो तो बोलते हैं यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. अगर आप इन पेरेंट्स को एज लॉन्ग एज पुचकारते रहो तो अच्छा बच्चा है. तो भाई ये किस टाइप का माइंडसेट है यार? व्हाट आर दीज पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग कि आपने बच्चा पैदा किया उसकी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करो. एवरीवन हैज देयर लाइक्स, एवरीवन हैज देयर डिसलाइक्स एंड एम्ब्रेसिंग दैट इज व्हाट मेक्स देम इंडिविजुअल्स. नाउ let me talk to the next generations. So those of you who are next generation in the family business who are watching this video, yeah, it is your responsibility here. I would invite you to be courageous. Be courageous here with your parents. No matter how much they don't like you speaking out your truth, you've got to speak out your truth, man. You've got to bring out the individual in you. And, sooner or later, they will embrace it. But if they are not, does not mean कि आप अपनी बत्ती बुझा लो यार. Control is real with parents. That's the unfortunate truth. But at the same time, it does not allow you to take someone's life. If your family is not listening, seek outside help. Never turn your fear into someone else's death. And the victim in such case is not the society, it's the person who believed the engagement, it's the person whose family welcomed you, it's the person whose life was taken away. As a family, I think there's something that needs to be worked on is, create the space for your kids to speak the truth. It's a life decision, it's not a public event, it's not, how do I say, it's बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, लाइफ का सवाल है. एंड इफ योर अडल्ट चाइल्ड डिपेंड्स ऑन यू फॉर मनी, don't financially abuse them. Don't make it about money. Don't use money to control your kids. Separate family honor from social image. Family honor है कि आपके घर परिवार डाइनिंग टेबल पे कितना खुल के हंस रहा है. Don't confuse it with लोग क्या सोचेंगे. Make space with difficult conversations. Ask your children, are you happy? Give them space to tell you, make them feel safe. Will you still feel safe? I mean, I know कि पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसे अपब्रिंगिंग करी है इसलिए आप वो फॉरवर्ड ट्रिकल डाउन कर रहे हो. बट आज का ज़माना अलग है, आज की एजुकेशन अलग है, आज का अपब्रिंगिंग अलग है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है. पीपल आर मच मोर अवेयर. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ AI. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द इंडियन सोसाइटी. वी आर not there yet. And ये जो फैमिली पेट्रियार्क्स होते हैं इनको बिजनेस में 4 मैनेजर मिल जाते हैं और घर पे 4 हेल्पर मिल जाते हैं जो इनको सर सलाम करते हैं और ये अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं. अपने आप को दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. भाई तेरी 50 करोड़ टर्नओवर है, तेरी 10 करोड़ 15 करोड़ टर्नओवर है, चल 100 करोड़ टर्नओवर है. But that does not give you the right. You must have the sense to treat your child with honor. And I would invite the parents here, and this is a wake-up call, and it's a tragic
story, and it is the worst possible outcome of fear, dishonesty, pressure. A young man lost his life, families are destroyed, and society is asking, yeah, how did it come to this? So, to business families, it is not your turnover, it is not your balance sheets that really is your reputation. It is how happy and genuinely your kids laugh on the dining table when you're having a meal together in your house. So, thanks, guys. Thanks for watching this video, and please share it with someone that you think will get value from this video. Also, share with someone who you think would not like this video. Give it a thumbs up and give it a thumbs down if you think kya bakwas kar raha hai. That's it for now. Bye.